ऑफ कर दो, टर्न ऑफ कर दो। Okay, so in today's class, we will be starting with the chapter 9 in the book that is written by Stop and McCanke, and that is about the gas turbine cycle. Okay. Let me give you a short summary of this particular chapter. So, obviously, first we will be looking at what gas turbine engines are and what are the advantages and disadvantages of the gas turbine power plants and the gas turbine engines. Okay, and what is the working principle of the gas turbine engine? Okay, how it works. And then after that, after completing this discussion, we will talk about um, the cycle upon which the gas turbine power plant runs. Okay, that is the Brayton cycle or Joule cycle. We will show the cycle on PV diagram, but mostly on TS diagram, how it looks like. Then after that, discussing different processes over there, we will discuss about we will derive some formulas which will tell you that how much power is consumed by the compressor and similarly how much is the work produced by the turbine, how much is the heat supplied. So obviously in terms of temperature and specific heat, we will find out or we will derive and discuss some formulas over there, okay, so that you should know what is the relationship between the temperatures with the um, defining efficiency of the overall gas turbine power plant. Okay, and then some auxiliary topics like why we are using power turbines. Okay, and why we need the use of parallel flow units, and obviously we'll solve some examples. So this will be the overall summary for today's class. Then inshallah the next class we will try to wind up this chapter and we will talk about modification to the basic cycles. Okay. So today's class will be up to the parallel flow units, right? Okay, so before going into the discussion, let me ask you guys, anybody who know what is a gas turbine power plant? Okay, in front of you, we have some typical diagrams of the gas turbine engines. You may be aware of this, okay? So let me ask you, okay, I just want to let you know and I want from you guys कि भाई आप क्या जानते हैं गैस टरबाइन इंजन के बारे में जी जी anybody in the class no one I think you are not physically there okay so let me ask one by one Yes, sir, we are here, sir, but no idea. no idea okay this is not good because at least you are in sixth semester okay so you should know what a gas turbine power plant and what a gas turbine engine is ठीक है थोड़ा सा आप लोग engage होंगे तो अच्छा होगा हाँ जी मेहरान क्या कहता है वो व्हाट इज गैस टरबाइन इंजन आपने कहीं देखा है क्या Sir, input, sir, gas. Yes, sir, is good. यानी किसी जगह पे आपने गैस टरबाइन देखा है Sir, जी idea नहीं है sir हाँ, इतना gas turbines का sir. ओके हाँ, ओके कोई नो आइडिया प्रॉब्लम नहीं हाँ नहीं। नो आइडिया ओके मुनीब अहमद आपने गैस सर टरबाइन इंजन कहीं देखा है कि नहीं नहीं देखा सर। ओके व्हाट अबाउट नासिर शाह आपने स्टीम इंजन देखा है स्टीम इंजन नासिर शाह इज नॉट देयर
हसीब अली, आपने स्टीम इंजन देखा है कहीं? शायद सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ा हुआ है, वो थर्मोडायनेमिक्स पड़ा नहीं, इलेक्ट्रिकल। इंस्टॉल्ड है बॉयलर रूम में, जिसको हम बॉयलर रूम कहते हैं, दैट इज स्टीम जी जी टरबाइन, सर। स्टीम। ठीक है। एक हमारे साथ पुराना जो है वहाँ पे गैस टरबाइन भी पड़ा हुआ था, किसी ने उठा लिया उसको। जहाँ पे वो गर्ल्स स्टाफ रूम बने ना, उसके साथ एक गैस टरबाइन भी पड़ा हुआ था, राइट। बट एनीवे, किसी ने अगर सर वो जहाज जेट में नहीं था? किसी ने अगर जहाज में सफर किया ना, तो उसने शायद जो है ये इंजन देखा होगा। ठीक है। ओके। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड कि आप लोग जो है ना इसके बारे में क्या जानते हैं, ताकि हम जो है ना उस लेवल के ऊपर इसके ऊपर बात कर लें। एनीवेज, इन फ्रंट ऑफ यू I have put these three images. Okay, these two are, let me tell you, these two are open cycle gas turbine power plants used in aircraft. Okay, तो ये जो है ना आपके पास गैस टरबाइन पावर प्लांट है, used in aircraft. Okay, or you can say this is basically the open cycle gas turbine power plant. This one is used, this is closed gas turbine power plant are stationary gas turbine power plants used for electricity generation. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि these two engines, they are mounted on the wings of the aircraft, okay, for propulsion purposes and similarly for other purposes where you need the energy, okay, in the form of some compressed air or some electricity, etc. So these are mounted on the wing, okay, and the exhaust is just thrown into the atmosphere. It is not recycled. For that reason, this is open cycle gas turbine power plant. Here, this one is stationary gas turbine power plant, where the power plant or the gas turbine engine is used for electricity generation. Okay. So lots of other examples are there. Okay, we will be discussing different types of engines, different types of gas turbine power plants. But this is actually just to give you simple glimpses of what the gas turbine units are. Okay, so if you see here, what happens is that this is the air is working fluid here. Okay, air is coming to this engine. Now इस engine में क्या चीजें हैं, I will also show you a video that demonstrates what these things are. Okay, but let me tell you here. तो यहाँ पे आप देख लें, the air comes here, okay, through the fan. Now this one is a compressor. ठीक है, ये कंप्रेसर हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस दिस रोटरी सॉरी दिस एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, okay, in rotodynamic machine. But here you can just say that this is compressor. Okay, this is uh, axial flow compressor. Why this is called low pressure compressor? Because this is atmospheric pressure. Now the air is compressed up to some level, but not too much. So for that reason, like for example here, if you have 1 atmosphere, so maybe here you are having 3 atmosphere. Okay, so your pressure ratio is 3 by 1, for example. Okay, so for that reason the pressure is increased due to this compressor, but not too much. So for that reason this is known as low pressure compressor, right? Then after that, it is compressed more, right? The air is compressed here. This is also a axial flow compressor. ठीक है, इसको हम कहते हैं high pressure compressor, and the reason is very obvious, because now the pressure is increased, let's say from 3 to maybe 15. Okay, 15 bar or 15 units. So you can see that the pressure is increased too much in this compartment, in this compressor. So for that reason this is known as a high pressure compressor. ये 5 stages, what this 5 stages and 14 stages, we will discuss it at some point. Okay, what a stage is. Okay, but for at this time you can just say this is low pressure compressor and this is high pressure compressor. Now here, at the exit
of high pressure compressor, what we are having, हमारे पास क्या चीज है, that is the working substance or the working fluid, उसकी क्या हालत हो जाती है यहाँ पे, at the exit of the high pressure we have a pressurized air, that's it, ठीक है. That pressurized air, obviously you have increased the pressure of the working fluid. Let's say for example 1 atmosphere के ऊपर है, तो आपने जो है ना उसको 10 atmosphere के ऊपर आप उसको ले गए, ठीक है, या 1 बार के ऊपर है तो आप 10 बार के ऊपर इसको ले गए, right? So this means that you have increased the pressure from 1 unit to 10 units. So obviously it is now you have added the energy to this air, right? Now you now till now you have just used mechanical components to increase the pressure of the working fluid, that is here. Now here at this point we have combustion, our combustion chamber, our combustor, etc., where the fuel is sprayed on this high pressure air, ठीक है, pressure air जो है ना आपने air को pressurize किया, then you have sprayed the फ्यूल. फ्यूल क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप के, ये केरोसिन ऑयल भी है. द फ्यूल इन द एयरक्राफ्ट इंजन और द गैस टर्बाइन्स आर प्योर फॉर्म ऑफ kerosene oil, JP4, JP8, they are the trade names, okay. So that air, that fuel is sprayed over here, or in other words you can say that you have added chemical energy to the air, the compressed air. So at the exit of the combustor, okay, at the exit of the compressor we had only compressed air, but at the exit of the combustor we have what, we have high pressure, right, and a high temperature, okay. Now we are not saying this is the, because at this point, let's say point 1, we have high pressure air, okay, you need to listen to my words. Then after at the exit of the combustor we have high pressure and high temperature gases, not air, because the composition of the working fluid, it is changed, okay. So when the composition of the working fluid it changes, then the you know the this is now gas, okay, and the chemical energy is added to the compressed air, okay, or the air that is incoming. Now at this point, before entry to this is actually the high pressure turbine, okay, or you can say this is the turbine, okay. This is the this one, the small one, this is high pressure turbine, and this one is low pressure turbine. Why high and low? Obviously here the pressure is high and here the pressure is dropped, and that is low pressure turbine, okay. So high pressure, high temperature gases, when they expand in the turbine subsequently, either in high pressure and low pressure turbines, it produces work for us, okay. Or in other words, it rotates this shaft that is known as the power shaft, okay. तो ये shaft जो है आपके लिए rotate करता है. Now rotation of the shaft is basically the work produced. If you remember in previous class I told you that we have power producing devices, those are turbines, and we have power consuming devices. You need to work on the compressor. ये हमारे पास power consuming devices है, ठीक है. So you need to work on compressor in order to pressurize the air from, let's say, 1 bar to 10 bar. But the turbine high pressure, high temperature gases expand and it produces work for you, okay. Or in other words you can say that here the chemical energy is again converted into mechanical energy. Why mechanical energy? Because due to expansion, the work is and that is rotation of the shaft, ठीक है. अब अगर आपके पास ये rotation है, so this is basically your power, right? Because you know very well that P is equal to tau into omega, okay. Now you have a rotational speed over here, okay, so you can, this is actually your power, okay. And very simply, अगर आप क्या करें कि if you, let's say for example, now this is, we will discuss these things why we are having this shape, and later on you will see that we will be having a nozzle over here, okay. So we will discuss those things, how to produce thrust, but let me tell you that this is the power produced in this manner,
And if you want to get electricity from here, तो हम क्या करते हैं कि ये आप, let's say if you have this is shaft, right, and that is rotating, and then we have the permanent magnets, okay, around this, right. So let's say this is south pole and this is north pole, and the shaft constantly rotates, okay, and it cuts the magnetic field line. And due to cutting this magnetic field line, the EMF is produced. Okay, that is what? That is your, voltage. That is your electricity. So if you are Electronic. using the same, G. So if you are using this gas turbine engine for general power production, you can just use this power shaft. But if you want to take electricity out from here, so you can use the permanent magnet type arrangement, and you, just like dynamo, okay, you can get the electricity out from there. Okay, so I will show you some videos, okay, जहाँ पे आप ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, but ये general introduction है. So if I summarize the working, either this one or this one, okay, these are open cycle. Remember, they are actually different types of the aircraft engine. This one is turbojet engine, okay, and this one is the turbofan engine. There is a difference between these two. At some point, I will let you know. ठीक है कि इसकी शक्ल क्यों मुख्तलिफ है. यहाँ पे आपको जो है ना, you are not seeing any fan, ठीक है, ये बड़ा जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, right? Here, this is actually fan blades, okay, but here we don't have any. Just we have actually this conduit diversion section, and then we have the compressor right away starts from here. यहाँ पे जो है फैन है, उसके बाद आपके पास कंप्रेसर और टरबाइन वगैरह स्टार्ट होते हैं. Why we need this fan? At some point I will let you know, ठीक है, because इसकी जरूरत पड़ती है. So you can see we have fan. ये थोड़ा सा आप ये जो ये इसकी एब्रीविएशन है HPC जो है ना, क्या है? हाई प्रेशर कंप्रेसर. LPC क्या है? लो प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है. HPT हाई प्रेशर टरबाइन, एंड LPT इज योर लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है. ये टरबाइन रियर फ्रेम है हमारे पास. इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन भी हमारे पास होते हैं. एंड सिमिलरली TRF एक चीज होती है जिसको टरबाइन रियर फ्रेम कहते हैं, बट एटलीस्ट यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग, राइट. तो ये जो है ना आपके पास स्टेशनरी गैस टरबाइन यूनिट है, एंड दीज टू आर ओपन साइकिल यूनिट फॉर थ्रस्ट प्रोडक्शन इन द एयरक्राफ्ट. ओके, एंड लेट मी आल्सो टेल यू, यहाँ पे आपके पास क्या है, यू कैन इवन सी प्रेशर. तो यहाँ पे यू सी हियर द प्रेशर इज low, and when it passes through the low pressure compressor, the pressure increases gradually, and then it passes through the high pressure compressor, तो pressure जो है ना और भी increase हो जाता है. Then after that in the combustion chamber, the ये constant pressure line है, अच्छा, ये constant pressure के ऊपर combustion होती है ideally. So the energy is added, the chemical energy is added, and then that high pressure high temperature gases are expanded in the turbine, and obviously expansion is what? Expansion is basically pressure drop. Pressure drop को हम expansion कहते हैं, right? तो ये यहाँ से जो है ना pressure drop होता है, और वो energy जो कि हमने add की थी कहाँ गई? वो जो है ना in the form of mechanical energy वो convert हो गई. Chemical energy is converted into mechanical energy, right? And you have this output. And same is the case with temperature also. Temperature, we don't want to increase temperature inside the compressor, but it is increased over there, ठीक है. आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि undue the temperature is increased, right? तो ये जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज करता है. हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर इंक्रीज हो. क्यों नहीं चाहते? I will let you know when we will be talking about the modification to the basic cycle, but at this point undue the temperature also increases when you compress the air, ठीक है. So this is the generally the working principle of the gas turbine engine. So let me summarize it, or let me repeat it. The gas, the air enters, okay, at the atmospheric pressure to the compressor. The air, this low pressure compressor compresses the air, and then it gives it to the the high pressure compressor. Where at the exit of the high pressure compressor we have high pressure, okay, and then the fuel is sprayed. Okay, the chemical energy is added in the combustion chamber, and at the exit of the combustion chamber we have high pressure high temperature gases, not air, gases, okay,
and those high pressure gases will expand in the high pressure and low pressure turbines subsequently, the power is produced. Okay, this power can be used for now any purpose, for electricity production, for rotating anything. Okay, let's say for conditioning purposes or for any other purposes. One thing, let me tell you that remember the power produced by this turbine. Okay, ये turbine जितना power produce करता है ना, so you know some of, क्योंकि जहाज उड़ रहे हैं ना, the aircraft is flying in the air. So from where you are giving the work input to these two compressor, कहाँ से आप इसको work input देते हैं? Because you know very well, by principle, the compressors are work consuming devices. You need to consume some work, some power to to let them work. Okay, तो आप जो है ना किस तरह इसको पावर देते हैं? तो ये पावर बेसिकली इस टरबाइन से ही हम लेते हैं. ठीक है, so you let me tell you that for example the power produced by the turbine is a Z. Okay, and the power consumed by the compressor, this is X. ठीक है, तो ये आपके पास Z minus X जो होगा ना, this will be the useful power. ठीक है, the total power produced by the turbine minus the power consumed by the compressor. Okay, that is the difference of these two. इसके जब आप इसको माइनस करेंगे, जितना आपके पास बाकी बचता है ना, इसको हम कहते हैं the useful power output. ठीक है, जिसको आप जो है ना, जिस तरह मैंने बताया, so you can use it for electricity purpose generation and some other purposes. Right? Okay. So let us complete this thing, and I will ask you if you have questions. So these are actually the writings that I explained orally. So working principle आपके पास क्या है कि energy is added to the gas stream. ठीक है, किस तरह केमिकल एनर्जी जो पहले इसको कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद केमिकल एनर्जी ऐड करते हैं. ठीक है, तो एनर्जी इज एडेड टू द गैस स्ट्रीम. कंबशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर. यहाँ पे गैस से मराद जो है ना, एयर है. Okay, energy is added to the air stream, I should say. Why? Why we add energy? जैसे the compressor consumes work, so वो जो है ना power या work कहाँ चला जाता है? It is used to increase the energy of the working fluid, that is air in this case. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि energy is added to the gas stream. First, then combustion increases the temperature, velocity and volume of the gas flow. Chemical energy is added to the main stream. अच्छा, ये भी यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि why we are adding chemical energy? Why we are not expanding just the pressurized gas, the pressurized air in the turbine and to produce some work? ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है ना, कि भाई हम जो है एयर को प्रेशराइज करें. सर पावर इतनी नहीं होती सर इसके इसकी. एग्जैक्टली, पावर होगी बट इट विल नॉट बी एनफ. ये किसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फिर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एयर मोटर. एयर मोटर में यही होता है. अच्छा, compressed air is used to rotate the shaft, but over there you will see कि हमारे पास पावर इतना प्रोड्यूस नहीं होता. आप लोगों ने न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर्स भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं. वी हैव आल्सो न्यूमेटिक जो कि कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट एयर मोटर ही होता है. वी हैव एक्चुअली कंप्रेस्ड एयर coming in the hose. Okay, and it rotates that shaft, and you can use it as a air motor. So यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी हम ऐड करते हैं ताकि ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो. ओके, देन आफ्टर दैट टरबाइन रोटेट पावरिंग द कंप्रेसर. ये मैं आपको बता रहा था कि टरबाइन रोटेट मींस दैट इट प्रोड्यूसेस पावर फॉर अस. नाउ पार्ट ऑफ द पावर is used in the compressor, and the remaining is basically बल्कि यहाँ पे शायद होगा भी, energy is then extracted in the form of shaft power, and that is compressed air and thrust. Okay, so energy is then extracted in the shaft power, right? So we have, if I summarize this, so work of the turbine is equal to, okay, बल्कि network output will be work of the turbine minus work of the compressor. Okay, just a minute, right? एक दो मिनट वेट करो थोड़ा सा.
Okay, so you are here that the network output, okay, the work that is available, ठीक है, ये आपके पास किस चीज के बराबर होगा, द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन माइनस वर्क कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर, ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास टोटल वर्क नेटवर्क आउटपुट होगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू सिंपली जो कि हमने जो चीज पढ़ी है उसकी एक वीडियो जो है ना, चलिए हम देख लेते हैं ताकि आपको Rolls Royce is basically the engine producer, okay, ये यूके बेस्ड इंजन प्रोड्यूसर हैं, तो ये इसने ये वीडियो अपलोड की है जिस पर यू गाइस, तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस 2 मिनट की वीडियो। You can see this is almost the same engine I have put a diagram over there, ठीक है, तो ये यही engine है, ठीक है, ये आपके पास fan है, and then we have low and high pressure compressor, and then we have combustion chamber, and this is the turbine section, okay, high pressure and low pressure turbine section, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जी सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो जनरली जो चीज हमने डिस्कस की ना वही जो है आपको बताई थी, लेकिन पिक्टोरियली और वीडियो के थ्रू तो जो है ना आपने देख ली, ठीक है, कि किस तरीके से जो है गैस टरबाइन इंजन वर्क करता है, ठीक है। ओके, देन दिस इज एक्चुअली योर स्टेशनरी गैस टरबाइन यूनिट। सर जी जी, सर ये इनिशियली कंप्रेसर को कहाँ से एनर्जी दे के स्टार्ट करते हैं? अच्छा, ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास स्टार्टर होते हैं, वी हैव एक्चुअली स्टार्टर, जिस तरह हमारे पास टर्बो चार्ज सुपर चार्ज होते हैं, सो वी हैव स्टार्टर इन द इंजन, तो स्टार्टअप के लिए हम इसको देते हैं। इफ यू लुक एट लेट्स से फॉर एग्जांपल द एयरक्राफ्ट, तो उसके बेक के ऊपर जो है ना एक यू होता है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ओके, so when the aircraft is idle, okay, it is not flying or it is not having ground run, okay, तो वहां पे जो है ना इंजन ऑन नहीं होते, हमारे पास जो है ना ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट का काम होता है, तो यहाँ पे स्टार्टर हमारे पास जस्ट इनिशियली स्टार्ट कंप्रेसर, राइट, यस सर। ओके।
ना इसके बाद आपने इसकी जनरल वर्किंग प्रिंसिपल देख ली, उस यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ये दिस इज योर कंप्रेसर सेक्शन, राइट, एंड दिस इज योर कंबशन एंड दिस इज योर सॉरी दिस इज योर टरबाइन सेक्शन, यहाँ पे छोटा मैंने किया है, ठीक है। तो कंप्रेसर एंड देन कंबशन एंड देन टरबाइन एट द shaft when it is rotated, you can just see that you produce electricity from here. How? Because of these magnets over there, okay, or the magnetic field that is produced over here. Now, the thing is that you see here the exhaust is thrown directly into the atmosphere in open cycle. ठीक है, तो आपके पास जो एयरक्राफ्ट इंजन है उसमें जो है यहाँ पे यू आर जस्ट थ्रोइंग दिस एग्जॉस्ट, बट यू सी दिस एग्जॉस्ट इज yes, the energy extracted here in the turbine, but this is the exhaust, you will see that it is also having very high temperature. Okay, so you are just losing the heat. What is heat? Heat is basically our asset, so you are losing the asset. तो ये यहाँ पे ये बता रहा है, ये आप इसको पावर प्लांट 2 में स्टडी करेंगे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, उसमें क्या है कि द गैस टरबाइन पावर प्लांट एंड द स्टीम टरबाइन पावर प्लांट दे आर यूज्ड इन अ कंबाइंड साइकिल। ठीक है, किस तरीके से स्टीम पावर प्लांट में आप लोग क्या करते हैं कि यू आर जस्ट यू नीड टू हैव स्टीम, तो स्टीम कहाँ से आपको मिलेगा? बॉयलर से। ठीक है, बॉयलर को एनर्जी जो हीट होगी वो कहाँ से मिलेगी? वो जो है ना यहाँ से मिलती है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट सी दैट how you can combine these two power plants in order to have the combined cycle power plant. ठीक है, so you can just ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई? Yes, एनी sir. जी क्वेश्चन? सर। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। No, sir, no question. Okay, good. So now let us move forward, and these are some self-explanatory, सर ये lines. इसमें यार फ्यूल कोई फिक्स रेशो होती है या रैंडम के साथ ऐड करते हैं? क्या चीज? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी जी, दोबारा पूछे। सर कंप्रेस्ड एयर और जो हमारे पास केमिकल एनर्जी फ्यूल एक्सेट्रा होता है, ये इसकी कोई फिक्स रेशो होती है या रैंडमली मतलब किसी भी रेशो से ऐड हो सकते हैं किसी भी अमाउंट के साथ? फ्यूल नहीं, ये खास अमाउंट के साथ होता है। अच्छा, ये डिपेंड्स ऑन पावर, कितना पावर जो है ना आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो पावर रिक्वायरमेंट हमारे पास डिफरेंट होती है इन द टेक ऑफ, राइट, यू नीड टू मच पावर। ओके, टेक ऑफ, जब जहाज टेक ऑफ करता है उसमें आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। जो हमने इंजन देखे हैं अराउंड 78 गैलन पर मिनट जो है ना वो फ्यूल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एंड दैट फ्यूल इज वेरी एक्सपेंसिव, बट इन द क्रूज the power requirement reduces, and similarly maybe like in the landing or approach the power requirements are different. So for different requirements we have actually different amount of fuel that is spread over there. ठीक है, ये डिपेंड करता है कितना जो है ना आपको पावर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पावर के लिहाज से यहाँ पे एक सेंटेंस है भी, मेरे ख्याल में यहाँ पे होगा भी। ये देखें, ये डिलेड रिस्पांस टू चेंजेस इन पावर सेटिंग, ये यही वो पावर है कि अगर आपको पावर कम या ज्यादा चाहिए होना तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये डिलेड जो है ना रिस्पांस करता है। डिलेड रिस्पांस का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास इफ यू हैव आईसी इंजन, ओके, यू आर मूविंग ऑन अ रैंप, जस्ट यू कैन शिफ्ट योर गियर टू फर्स्ट गियर, ओके, और जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उसमें जो है ना आप वन को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है वो पावर चेंज हो जाएगी। एयरक्राफ्ट इंजन में इस तरह नहीं होता, बिकॉज यू आर हियर यू आर डायरेक्टली कंट्रोलिंग द पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, गियर आपने शिफ्ट किया तो आपके पास जो है ना पावर टार्क ज्यादा हो गया, स्पीड कम हो गया। ठीक है, रोटेशनल स्पीड। एंड इफ यू वांट टू डू द सेम थिंग इन द गैस टरबाइन इंजन, तो वहां पे आप जो है ना इसको इनडायरेक्टली वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यू नीड टू, जिस तरह आपने पूछा अभी कि भाई हम फ्यूल कितना स्प्रे करेंगे, तो यू नीड टू इनडायरेक्टली कंट्रोल द पावर आउटपुट, ताकि आप जो है ना यहाँ पे फ्यूल स्प्रे कम कर लें, कंप्रेशन जो है कम कर लें, तो उसके कम होने से आपके पास क्या होगा, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस थी उसके जो है ना प्रेशर एंड टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड व्हेन दे विल एक्सपेंड इन द टरबाइन लो पावर विल प्रोड्यूस। So for that reason, this is considered as disadvantage of delayed response to changes in power setting. इस बात की समझ आ गई आपको?
Yes, sir. Okay, so let us look at Yes, sir. the advantages of a gas turbine system. तो सबसे पहले जो एडवांटेज है दैट इज वेरी हाई पावर टू वेट रेशो. वेरी हाई पावर टू वेट रेशो का मतलब ये है कि पावर टू वेट का मतलब ये है कि इट प्रोड्यूसेस मोर पावर देन इट्स वेट. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इफ यू कंसिडर और इफ यू कंपेयर दिस विद द आईसी इंजन, तो उसका लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लेट्स से प्रोड्यूस 100 पाउंड और 1000 पाउंड थ्रस्ट. ओके, कितना थ्रस्ट आपने प्रोड्यूस करना है एंड यू आर यूजिंग गैस टर्बाइन इंजन. ठीक है, तो इसका वेट कम होगा. ठीक है, और यही थ्रस्ट अगर आपने प्रोड्यूस करना है, यही पावर अगर आपने प्रोड्यूस करना है यूजिंग आईसी इंजन, तो आपके लिए ये जो इंजन का वेट होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन इट इज हैविंग हाई पावर टू वेट रेशियो. इट इज प्रोड्यूसिंग मोर पावर देन इट्स इक्विवेलेंट वेट. तो फॉर दैट रीजन ये इसकी ज्यादा पावर टू वेट रेशियो की वजह से जो है ना, हम आईसी इंजन को ज्यादा यूज नहीं करते एयरक्राफ्ट इंजन में और रॉकेट्स वगैरह में, बल्कि हम गैस टर्बाइन पावर प्लांट यूज करते हैं. और मैंने आपको बताया था कि लो एल्टीट्यूड के ऊपर जो छोटे छोटे जहाज चलते हैं या पायलट की ट्रेनिंग के लिए, उसके ऊपर वहां पे हमारे पास आईसी इंजन होता है. ठीक है, आईसी इंजन भी यूज कर सकते हैं because over there the requirements are not, the power requirements are not too much, so for that reason you can use IC engine. but टाइप एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, और भी जो है ना जो हमारे पास है, तो उसमें आप आईसी इंजन यूज कर सकते हैं. बट फॉर यू नो कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट यू कैन यूज और यू नीड टू यूज द गैस टर्बाइन पावर प्लांट. ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हाई पावर टू वेट रेशियो. देन इट इज मोर साइज एफिशिएंट. साइज एफिशिएंट का मतलब ये है कि बेसिकली लेंथ में थोड़ा ज्यादा है बट इट इज वेरी कम्पैक्ट. ठीक है, आपने भी देखा, यू कैन जस्ट एनकैप्सुलेट दिस इन यू नो इन द काउलिंग, जिस तरह आप लोगों ने जहाज की काउलिंग वगैरह देखी है विंग के ऊपर जो लगी होती है. ठीक है, तो साइज एफिशिएंट है. मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली व्हेन फ्यूअर, रिलेटिवली इसकी मूविंग पार्ट जो है ना फ्यूअर होते हैं कंप्रेसर एंड टरबाइन, दैट्स इट. तो और के बजाय जो है ना हमारे पास इसकी मूविंग पार्ट जो है वो कम होते हैं, और दूसरा ये कि ये एक उसमें चलता है. ठीक है, you can use this axial, यानी आपके पास axial flow compressor है and at the same time you are having axial flow turbines. Okay, and they are having low operating pressure, comparatively low operating pressure है हमारे पास. ठीक है, and the reason is very obvious because partly we are making use of the high pressure here, but then chemical energy is added to this. ठीक है, तो इसलिए जो है ना रिलेटिवली इसकी लो प्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर है. हाई ऑपरेशनल स्पीड है, वेरी हाई ऑपरेशनल स्पीड. आपने ये वीडियो में थोड़ा सा देखा इसको, ये डिपेंड करता है फ्रॉम, इट चेंजेस फ्रॉम इंजन टू इंजन. ओके, तो 3000 4000 5000 आरपीएम जो है ना इसका होता है. एंड इफ यू सी दैट कि इफ यू मल्टीप्लाई दिस 2 पाई एन, आरपीएम इज बेसिकली योर एन. ठीक है, 2 पाई एन ओवर 60. तो अगर आपने जो है ना इसका ओमेगा देखना है, राइट, you can see that you need to multiply 4000 5000 with 2 pi and divide by 60. तो आपको यहाँ पे ये रेडियन पर सेकंड में इसकी सर्कुलर ये एंगुलर स्पीड जो है ना आपको मिल जाएगी. ठीक है, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट विद द टार्क, तो आप पावर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पावर जो है ना आपको यहाँ से ये देगा. एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास इफ यू लो और फ्यूअर मूविंग पार्ट, तो इसकी जो है ना लुब्रिकेशन और मेंटेनेंस कंजम्पशन भी कम होगी. इसलिए आपके पास मूविंग पार्ट ज्यादा होते हैं, वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, तो लुब्रिकेशन जो है उसकी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. यहाँ पे चूंकि कम है तो इसलिए जो है हमारे पास लुब्रिकेशन चार्जेस, लुब्रिकेशन जो है इसकी कम है. ठीक है, इफ यू लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द गैस टर्बाइन इंजन, तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है वो इसमें क्या है कि मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू सिमिलर साइज रेसिप्रोकेटिंग इंजन. ये एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव. एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस. इफ मे बी आपने शायद, बल्कि आप इसको देख लें यूट्यूब के ऊपर या इसके गूगल के ऊपर आप थोड़ा सर्च करें. तो इफ यू लुक एट द पर्टिकुलरली द टरबाइन ब्लेड, ठीक है, अगर टरबाइन की ब्लेड्स को आप देख लें एंड पर्टिकुलरली द हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड, तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड made up of you know very expensive material, composite material. And why? The reason is that the blades of the high pressure turbine, they are exposed to very high pressure and at the same time very high temperature. ठीक है, तो इसको विथस्टैंड करने के लिए मटेरियल जो है ना इसका शेप, साइज एंड सिमिलरली you know the material from which that is made is very expensive.
तो इसलिए जो है ना ये पूरे जहाज को जो है पूरे सॉरी इंजन को एक्सपेंसिव बनाता है. वन द सेकंड थिंग इज दैट इफ यू लुक यू नो into the exploded view of these blades, you will see we have conical holes for cooling. ठीक है, तो एक शेप के लिहाज से और एक जो है ना यहाँ पे जो कूलिंग होल्स वगैरह बनती हैं. सिमिलरली जो मटेरियल है इसकी वजह से ये जो टरबाइन के रोटर्स होते हैं ना दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड फॉर दैट रीजन आई थिंक पाकिस्तान में जो है ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग वाले इसको बनाते थे. आजकल मेरे ख्याल में वो भी नहीं बना रहे, शायद मिलिट्री वाले बना रहे हो, बट दे आर बेसिकली इम्पोर्टेड, राइट. सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. जो हमने देखा था सिंपल एयरक्राफ्ट इंजन में, ठीक है, वेरी वेरी ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट इंजन. आजकल तो बहुत जबरदस्त किस्म के इंजन आ गए हैं. तो इन अ वेरी ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट इंजन अ सिंगल ब्लेड ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन इज जो आपकी तकरीबन 10-12 लाख रुपए का एक ब्लेड होता है. ठीक है, सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. दैट मेक्स द ओवरऑल इंजन एक्सपेंसिव. ये डिसएडवांटेज है. एंड मोर कॉम्प्लेक्स मशीनिंग ऑपरेशन. व्हाई एक्सपेंसिव? तो ये कॉम्प्लेक्स मशीनिंग ऑपरेशन की वजह से होती है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया. इफ यू लुक एट द you know the shape of these blades, okay, aerofoil shape जो इसका होता है, तो you will see that they are very complex, right. तो ये भी एक disadvantage है, complex shape को यहाँ आसानी से नहीं बना सकते, you know very well. And the main disadvantage of the gas turbine power plant, if you run this on the basic cycle and in open cycle, that is what, that is its low efficiency. इसकी efficiency जो है ना बहुत low होती है. ठीक है, कैसे हम फिर इसकी efficiency को increase करते हैं तो वो जो है ना फिर हम आगे देख लेंगे, राइट. एक और चीज भी है, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर इसकी efficiency low है तो why we are using this in the commercial aircraft and in the military aircraft, okay, in the fighter jets etc. क्यों हम इसको यूज करते हैं? तो इसके दो रीजन है. मिलिट्री एयरक्राफ्ट में तो हम इसलिए इसको यूज करते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट यू नो एफिशिएंसी, वी नीड टू फुलफिल अवर टारगेट. हमने टारगेट को फुलफिल करना है, ठीक है, किसी जगह को हिट करना है, या मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यू नो वेरी वेल देयर पर्पसेस, तो वहां पे हम एफिशिएंसी का ख्याल नहीं रखते. जितना जो है ना ज्यादा फ्यूल यूज होगा तो कोई परवाह नहीं है हमें, ठीक है. बट एज फार एज द कमर्शियल एयरक्राफ्ट आर कंसर्न, तो फिर जो है मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी. ठीक है, तो इसमें एक चीज आती है बाईपास रेशो की. आपने शायद वीडियो में देखा भी, शायद आपने उसको नहीं ऑब्जर्व किया, बट दे वर सेइंग दैट most of the air is bypassed. Some of the air is actually taken in by the compressor and then it is compressed and combusted and then it is expanded in the gas turbine. तो ज्यादा जो है ना एयर हम क्या करते हैं, बाईपास करते हैं. And using the idea of nozzle, we are just accelerating the fluid and reducing the thrust. तो energy efficiency increment के हमारे पास है. We have methods of how to increase efficiency, but even if you use those methods and compare with the other engines, its efficiency is low, so that is considered as a disadvantage. And the last one ये हमने discuss किया कि delayed response to changes in power setting. Any question in these two slides? हाँ जी, कोई मसला है? You can ask. Okay, so we can move forward, right? Now after that, the cycle upon which the gas turbine power plant runs, okay, or it works, that is known as Brayton cycle. ठीक है, इसको ब्रेटन साइकिल कहते हैं. इस तरह आपके पास कार्नोट साइकिल है, जूल साइकिल है, ठीक है, इस तरह डीजल साइकिल है, तो ये हमारे पास ब्रेटन साइकिल है. ठीक है. Now look how it works. You can see here what happens is, remember that is the actual diagram. ठीक है, this one is the actual engine, these one. Okay. Now this is known as flow diagram. So even in the exam or some physics, if I ask you draw the flow diagram, so by flow diagram actually we mean this thing. ठीक है. तो you can see यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो कंप्रेसर का जो शेप बनता है ना, तो वो इस तरह बनता है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली शेप ऑफ द कंप्रेसर, जिस तरह ये आपको ये नजर आता है. तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंप्रेसर इज, ये है आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ये मेरे पास पिन थोड़ा सा वो हो रहा है. दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. टरबाइन का, द टरबाइन इज द मिरर इमेज ऑफ दिस. ठीक है, टरबाइन जो है ना इसका मिरर इमेज है, ये टरबाइन है. ठीक है, सो दिस वन इज अ compressor and this one is symbolic representation for combustion, this one turbine. And for combustion chamber, it depends how or what type of combustion chamber you are using.
वी हैव एन्यूलर टाइप, वी हैव कैन टाइप, बट मोस्टली जो है ना इसको हम इस सर्कल से जो है ना शो करते हैं. दिस इज एक्चुअली द कंबशन चेंबर CC. So if I write this is your compressor, this is your turbine, and this is combustion chamber CC. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना ये हम यूज करेंगे, ये आपको मतलब पता होनी चाहिए. Now in the open cycle, very basic cycle, this is actually idealized Brayton cycle. You need to look at this, right? कि क्या है ये लफ्ज जो है ना idealized, या you can say ideal Brayton cycle. Ideal क्यों इसको कहते हैं, we will see. So the fresh air comes to the compressor, ठीक है, at state 1. तो यहाँ पे जो भी इसकी ambient air है, it is having some temperature and some pressure, it is coming or it is entered to the compressor. In the compressor the air is, अब यहाँ पे जो है ना एक कंप्रेसर की बात करते हैं. अच्छा, फिर at some point we will split this into low pressure and high pressure. Similarly we are talking about a single turbine. At some point we will split this turbine into high pressure and low pressure turbine. But for the time being you can just use single compressor and single turbine. ठीक है. So fresh air comes to or enters the compressor. The compressor compresses the air. Okay, and we are saying the compressor compresses the air reversible adiabatically or isentropically. There are no losses. ठीक है, इसलिए इसको आइडियल साइकिल कहते हैं. ठीक है. Then after that the compressed air is given to the combustion chamber where the fuel is spread over here, right? And 8.3, now 8.2, what we have, what is the status of the working fluid? High pressure air. And after combustion chamber 8.3 we have high pressure, high temperature gases. Okay, or gas you can say. Now at 3 you will be having like यहाँ पे अगर आपके पास, if you have T1 and P1, here you will be having P2 and T2, and here you will be having T3 and P3, and here you will be having P4 and T4, right? And temperature. तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या होगा कि the gas that is at P3 and T3, high pressure high temperature gas, when it is spent in turbine, you will see that the power or the work output will be produced. Okay, and remaining, you can say that it exists the turbine that is known as the exhaust gas. Okay, and it is thrown into the atmosphere. Okay, it is not recycled. At some point we will see कि we will be modifying the basic cycle. तो यहाँ पे इस गैस को हम use करेंगे, right? So this is the basic flow as far as the Brayton cycle is concerned. And if you look keenly into this shaft, यहाँ से ये जो आपके पास work output है ना, इसको आप देख लें. The shaft from where the work output is taken, ठीक है, जिससे mutual work output हम लेते हैं. So on the same shaft, the turbine and the compressors are mounted. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि the shaft upon which the compressor and turbine are mounted, from the same shaft you are taking the work output. ठीक है, ये चीज आपके जहन में हो. At some point we will discuss कि ये जो है ना we will basically split the shaft into two. ठीक है, क्यों हम split करेंगे तो next slide में जो है ना हम इस चीज को देख लेंगे. So you see here कि gas turbine are described thermodynamically by the Brayton cycle, and the PV diagram and the TS diagram you can see here. ठीक है, तो अगर आप TS diagram को देखें 1 to 2 क्या है आपके पास, this from state 1 to state 2 is the compression process. ठीक है, ये compression process है. यहाँ से भी आप देख सकते हैं this is the V and this one is P. तो ये 1 to 2 compression process है. This is compression process. और वो compression क्या है, isentropic compression है. What is isentropic process? इसका दूसरा नाम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी है. ये मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ दैट थिंग. ठीक है, कि आपके पास जो है ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं. सो वी आर सेइंग by using the word ideal Brayton cycle, we are considering that compression in the compressor is the isentropic. The entropy doesn't change. Okay, or reversible adiabatic. So 1 to 2 is isentropic compression in the compressor. What happens in 2 to 3? So 2 to 3 क्या होता है? 2 to 3. This is obviously combustion.
कंबशन में क्या होता है, हीट इज एडेड, so you can say that heat supply, what is that, heat supply, 2 to 3 is heat supply at constant pressure. हम कहते हैं constant pressure वैसे होता नहीं है, लेकिन we are discussing ideal, so हम कहते हैं कि भाई constant pressure के ऊपर जो है ना हमारे पास है ये combustion process होता है, constant pressure combustion. constant pressure combustion का क्या मतलब होगा कि we have P2 here, ठीक है, अगर constant pressure combustion process है then here we have P3, तो P2 और P3 सेम होंगे, isn't it? ठीक है, इसको हम कहते हैं ये जैसे सेम होते नहीं है, there is a slight change in pressure, इसको हम at some point discuss करेंगे, slight loss in the pressure, but at the same time like at this point you can say that we have constant pressure heat addition process, combustion chamber में heat addition होती है, तो PV के ऊपर भी आप देख सकते हैं isentropic compression and then 2 to 3 is a constant pressure, ये pressure है ना, तो constant pressure heat addition, ठीक है, and then after that 3 to 4 is a isentropic expansion in the turbine, ठीक है, यहाँ पे isentropic expansion in the turbine, and 4 to 1 is constant constant pressure this heat delivery, ठीक है, या exhaust process हमारे पास है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना हमारे पास कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट होता है, तो फॉर दैट रीजन इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर एग्जॉस्ट. तो अगर मैं इसको रिपीट करूं तो बल्कि यहाँ पे है भी, एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, ठीक है, एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, कंबशन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर कंबशन है. यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना, आपको पता है टीएस डायग्राम को हम कैसे ड्रा करते थे, दिस इज योर टीएस डायग्राम, सॉरी दिस इज योर टीएस डायग्राम, ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर हम जो है ना इसको ऐसे ड्रा करते थे, ठीक है, और इफ यू सी हमारे पास जो है ना ये दो अगर लाइन हैं तो ये जो है ना ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती थी, ठीक है. अब हम जो है ना इस रीजन को तो नहीं पढ़ रहे, वी आर एक्चुअली इन गैसियस रीजन, तो ये जो दो चीजें हैं ना ये वाली दे आर बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर लाइन. अच्छा ये क्या है, दे आर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है, तो ये जो है दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन. और एट सम पॉइंट आई विल लेट यू नो कि ये जो हमारे पास, बल्कि यहाँ पे ही मैं आपको बता दूं, रिमेंबर दीज टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल नहीं जाते बल्कि दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ये जरूरी है, अच्छा इसको समझना, ठीक है. दीज कांस्टेंट प्रेशर लाइन दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ये ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये ऐसे, बल्कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये इस लाइन को आप देख लें और इस लाइन को देख लें, तो ये दिस इज एक्चुअली बिगर देन this one, okay, or this line is lengthy and this one is small one, okay, so you can say that this is actually diverging in nature. At some point I will remind this point to you कि ये diverging in nature है तो हमें क्या जो है फायदा या नुकसान हो सकता है. So this is actually the representation of the Brayton cycle on TS diagram. We have isentropic compression in the compressor, constant pressure heat supply, and isentropic expansion and constant pressure heat rejection इसको हम कहते हैं. The proper word is heat rejection. तो heat addition और this is heat rejection to the atmosphere. PV डायग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, constant isentropic compression and इसको isobaric, constant pressure को isobaric हम कहते हैं, isobaric heat addition and then isentropic this expansion and then isobaric हीट रिजेक्शन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिक या आइडियल ब्रेटन साइकिल. आइडियल इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम कंसीडर करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप देखें, अच्छा वी आर कंसीडरिंग दैट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस, कंप्रेशन इज इन द कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन इज इन द टर्बाइन, बोथ आर आइसेंट्रोपिक, देयर आर नो लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इसी को हम कहते हैं ना, तो इसमें कोई लॉस इन द गेन ऑफ हीट नहीं होता, ठीक है. आर इन अदर वर्ड्स वी आर कंसिडरिंग दैट कंप्रेसर एंड टर्बाइन आर वर्किंग आर रनिंग 100% एट 100% एफिशिएंसी. बात समझ आ गई आपको, तो इसलिए जो है ना इसको हम आइडियल ब्रेटन साइकिल कहते हैं. एंड बल्कि इसके बाद शायद होगा भी, ये है प्रैक्टिकल गैस टर्बाइन साइकिल. तो प्रैक्टिकल गैस टर्बाइन साइकिल में हम क्या कहते हैं कि वी आर नॉट कंसिडरिंग compressor and turbine, they are ideal, they are 100% efficient, ठीक है. तो एक था आपके पास आइडियल गैस टर्बाइन साइकिल. नाउ वी आर हैविंग प्रैक्टिकल
are real gas turbine cycle. Obviously we are talking about open cycle. ठीक है, open cycle क्या मतलब है? We are not using the exhaust. ठीक है, we are not circulating it back to entry. We are just throwing it into the atmosphere. तो ये open cycle है. ठीक है, तो यहाँ पे practical, so that was ideal gas turbine cycle, Brayton cycle, and this one is practical gas turbine cycle, where ideal cycle में हम क्या करते हैं कि भाई the compression and the expansion process are isentropic. In other words, there are no losses in the compressor and the turbine. In other words, the compressor and turbine, they are running at 100% efficiency. जो कि आपको पता है मैकेनिकल इक्विपमेंट कभी भी 100% efficiency के ऊपर नहीं चलता, कम होता है. ठीक है, तो इसलिए जो है ना अब हम प्रैक्टिकल साइकिल देखते हैं. तो प्रैक्टिकल साइकिल में ये दिस इज द सेम डायग्राम फ्रॉम योर बुक. So this is the air inlet compression, and then we have high pressure air and combustion chamber where fuel is sprayed, and then we have actually high temperature and high pressure gases. And when they expand, so you have actually this network output and the shaft upon which the compressor and turbine they are mounted. The same shaft is here used from where the work is taken out. ठीक है, are taken in. ठीक है, तो to show this practical unit on a TS diagram, तो आपको कैसे नजर आएगा? Remember, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना, तो this is actually both are actually on the same diagram TS. 1 to 2, 2s, 2s means isentropic. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि isentropic है, right? 1 to 2 is, बल्कि I should say 1 to 2 is, ठीक है, to 3 and then again to 4s. This is a 4s and then again to 1. Now this cycle is ideal Brayton cycle. ठीक है, 1 to 2 is constant entropy or isentropic compression, constant pressure heat addition, and 3 to 4 is a isentropic expansion, and 4 is to 1 is constant pressure heat rejection. So this one is a, ये जो solid आपको नजर आ रहा है, this one is a ideal Brayton cycle, but this one is real. क्यों? This 1 to 2 is actually deviation from the ideal behavior. ये जो आपको dash नजर आ रहा है, 1 to 2 is a non-isentropic, okay, compression process in the compressor, and then 2 to 3 is a heat addition. ये वही है, heat addition is actually we are not considering, we are not talking about combustion chamber. Okay, we are saying that over there are no losses, but we are just considering that there are losses in compressor and turbine. So we are okay, जब हमारे पास deviation की बात आती है ना, deviation from ideal to real behavior, तो वहां पे हम efficiency की बात करते हैं, you know very well. ठीक है, efficiency, भाई एक बंदा जो है इतना efficient है, why? You are comparing that one with a standard. ठीक है, 100 पे जो है ना, या इसकी efficiency 100% उसके साथ आप इसको compare करते हैं. तो जब भी आपके पास deviation from the ideal behavior की बात आती है, you need to talk about efficiency. This is 90% efficient, this is 95% efficient, this is 80% efficient. It depends, right? So इसलिए जो है we are saying that the compressors are not 100% efficient. Okay, how much is the deviation? It depends. ठीक है, so 1 to 2 is a non-isentropic, or you can say real expression, real compression process. 2 to 3 is this heat addition, and 3 to 4 is real non-isentropic this expansion process, and then 4 to 1 is the heat rejection process, that is the same. ठीक है, so if you look at this one using the same डायग्राम, ठीक है, इस CS डायग्राम को अगर आप यूज कर लें. अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर. हाँ सर। समझ आ रही है आपको? यस सर, और ओके, देन आफ्टर दैट यूजिंग द सेम डायग्राम, यही TS डायग्राम अगर आप यूज करेंगे ना, एंड just you can see that कि भाई what is this?
This is the, अच्छा remember, um, as I told you earlier, compressors are power consuming devices, turbines are power producing devices. तो यहाँ पे इसी concept को हम use करते हैं. The work consumed by the compressor when the process is isentropic. एक ये चीज हो गई. The work consumed by the compressor when the process is real, right? And the work produced by the turbine with the process is ideal, or you can say isentropic. And the work consumed, the work produced by the turbine when the process is non isentropic. ठीक है, तो ये चार चीजें हमारे पास हो गई. And the heat supplied जो है ना हमारे पास ये चीज होगी. This is the heat supplied and this is the heat rejected. ठीक है, तो ये चीज आपके ध्यान में हो. तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम एंड सी, तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली योर टेम्परेचर T1, प्रेशर T1. Here this is temperature T2s, right? I should say what? This is your T2s. This one is your T2. Diffraction की वजह से जो है ना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. Remember, we don't want to increase to have this heat. Okay? ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट जो है ना T1 से T2 ये हम नहीं चाहते, बट ये अनड्यू जो है ना इंक्रीज होती है, right? Anyway, and then after that we have this as your T3. इस T3 को जो है ना इस डायग्राम के हवाले से, अच्छा इस डायग्राम के हवाले से T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर. इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, डिनोटेड बाय T3. T2 is the temperature of the working fluid after compression process when the process is real. Okay, and T2 is the temperature of the working fluid or the air after compression when the process is isentropic. ठीक है. Similarly, T3 is the maximum temperature. T4 is the temperature of the working fluid at the exit of the turbine when the process is real and when the process is isentropic. तो ये T4s होगा हमारे पास, T4s. ठीक है. तो इन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप देखें, इन एब्रिविएशंस को और इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, तो एंड दीज आर एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. अच्छा ये मैं भूल गया, दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, जिस तरह मैंने अभी ड्रा किया था आपको. दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. दिस इज P1, ठीक है, एंड दिस वन इज P2. दीज आर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस. ठीक है. तो यहाँ पे जो है इफ यू सी, तो इसी डायग्राम को यूज करके यू कैन जस्ट गेट दिस, यू नो वेरी वेल, हमारे पास जो है ना वर्क डन ये प्रोसेस में अगर प्रोसेस हमारे पास है तो किसके बराबर होता है? CP डेल्टा टी. आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है. असल में ये MCP डेल्टा टी है, MCP डेल्टा टी. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा. दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. पता है आपको? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. M डॉट, ये M है, तो मास को जो है ना हम यूनिट यहाँ पे लेते हैं, इसलिए जो है ना मास को हम डिस्कस नहीं करते. तो CP डेल्टा टी, दिस इज बेसिकली योर वर्क डन. ठीक है. वर्क इनपुट होगा या वर्क जो है ना हमारे पास CP डेल्टा टी के बराबर होता है. CP इज द कांस्टेंट. ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. एंड डेल्टा टी ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. ठीक है. दिस इज योर वर्क. ठीक है, ये आपको पता होगा, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, राइट? सो एनीवे, वर्क इनपुट राइट इन रियल प्रोसेस वो क्या, या प्रैक्टिकल आपके पास क्या होगा? CP डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज योर T2 माइनस T1. दिस इज योर T2 एंड दिस इज योर T1. So this is actually the work consumed by the compressor. यहाँ पे this is work input. That is the work input to the compressor. ठीक है. CP T2 minus T1. Similarly for the combustion chamber, heat supplied कितना होगा आपके पास? कितना heat supply हुआ है? ठीक है. CP डेल्टा T. तो CP डेल्टा T क्या आपके पास? Maximum temperature minus T2. इसी डायग्राम से आप देख सकते हैं. For the turbine, how much work is produced or what is the work output? So that is your CP delta T again. So CP एंड डेल्टा टी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. ठीक है. तो ये जो है ना आपके पास क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वी हैव वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, हीट सप्लाइड इन द कंबशन चेंबर, एंड दिस इज द वर्क आउटपुट. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट नेट वर्क आउटपुट, ठीक है, वो किस चीज के बराबर होगा? द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन माइनस वर्क कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर. ठीक है. तो इससे जितना वर्क आपके पास बाकी रहता है, दैट इज बेसिकली यूज्ड
for some useful purposes. So this is actually the network output is this is the work of the turbine minus work, or you can say this is work output and this is the work input. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क आउटपुट. ठीक है, एफिशिएंसी किस चीज के बराबर होते हैं, यू नो वेरी वेल. ठीक है, कि थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू द नेटवर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड. तो नेटवर्क आउटपुट आपके पास क्या है, नेटवर्क आउटपुट इज दिस वन एंड हीट सप्लाइड इज दिस वन, राइट. So that divided by this is equal to thermal efficiency. So if you know very well, यहाँ पे if because Cp is constant, ठीक है, ईयर के लिए जो है ना ये कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू जो है आपको दे दी जाएगी. तो दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट ओवर हियर. सो यू नो if somehow you can find out the value of T3, T4, T1, T2, etc., you can readily find out the thermal efficiency. So remember, बल्कि इस पॉइंट पे ही मैं आपको बता दूं कि as far as the problems of the gas turbine power plants are concerned, they are a bit lengthy. Lengthy क्यों है कि you need to find out all the temperatures at all the points. कुछ आपको दिए होंगे, एक एग्जांपल हम सॉल्व भी करते हैं, कुछ आपको दिए होंगे बट मोस्टली यू नीड टू फाइंड आउट. अभी तो ये एक चार है टेम्परेचर है. एट सम पॉइंट we will split the turbines and the compressors and the combustion chambers. You will be having maybe up to 9 or 10 temperatures. ठीक है, so some of them you can find out readily, but most of them using some formulas and some relationships, some thermodynamic relationships you will be using to find out the values of temperatures at different points. तो अगर आपके पास ये टेम्परेचर आ जाए, if you know about the values of these temperature and different points, then the formulas are very simple. You can just put them over there and you can find out any unknown. ठीक है, तो ये जो है ना आपके जहन में हो कि the problems are a bit lengthy but they are very straightforward, right? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि when you talk about deviation from the ideal behavior, look, previously हमारे पास what was the diagram, you can just see. ये जो है ना आपके पास क्या था, this was 1 to 2 is isentropic compression. ठीक है, and here we are considering that this compressor is running at or working at 100% efficiency. It is having no losses. ठीक है, this was in ideal cycle. ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल साइकिल की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि now this compressor is not ideal, this is having some losses. ठीक है, और वो losses चीज डायग्राम के ऊपर हम in the form of deviation from this 1 to 2 is, ये जो 1 to 2 ये deviation है ना, ठीक है, ये basically this deviation is losses in the compressor. तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब losses की बात आती है we can discuss about the efficiency. तो यहाँ पे जो है ना if you talk about the efficiency of the compressor, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं this denoted by this isentropic efficiency of the compressor. ठीक है, the deviation of this compressor from having the isentropic behavior to real behavior, तो इसको हम कहते हैं isentropic efficiency of the compressor, and same is the case with the turbine also. Isentropic efficiency of the turbine, ठीक है, it is deviating from isentropic behavior to real behavior. How you can tackle that that the deviation by defining the efficiencies of the compressor and the turbine. इसकी समझ आ गई आपको? तो इसको हम डिफाइन करते हैं compressor isentropic efficiency, right, and this one is turbine isentropic efficiency. और ये कैसे आप डिफाइन करेंगे in terms of temperature? Look, if you see यहाँ पे आप देख लें, this is the work input to the compressor in through is है ना in isentropic process. Work input to the compressor in isentropic process divided by work input to the compressor in real process or practical process. ठीक है, Cp कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जो है ना ये चीज आ जाएगी. T2 is minus T1 divided by T2 minus T1. This is basically your isentropic efficiency of the compressor. ठीक है, same case with the turbine. Cp T3 minus T4. This is the work output practically or really. ठीक है, considering losses. So this is the practical the work output, and this one is the work output
of the turbine when the process is isentropic. If you divide this by that, तो आपके पास जो है ना ये आपके पास आ जाएगा. This will be the turbine isentropic efficiency. If you want to look at this on the diagram, so you see what is this? This is the T2S minus T1. T2S minus T1. This is the work input to the compressor when the process is isentropic. Divide by T2 minus T1. This is the work input to the compressor when the process is what? The process is real. ठीक है? So you can see ये क्या है? This is less. ये कम है ना? This one is less than this one. ठीक है? तो इसका मतलब ये कि less divide by more. ठीक है? तो लेस डिवाइड बाय मोर से आपके पास यहाँ पे कोई आएगा 90% इफिशिएंसी, 0.9 आएगा, 0.8 आएगा, 0.95 आएगा, 0.98 आएगा, तो 98%, 95% इस तरह की आपके पास इफिशिएंसी आ जाएगी. बात समझ आ गई आपको? सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस वन, so the work produced by the turbine in isentropic process, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में है. ठीक है, वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज डाउन देयर, जो कि ये यहाँ से शो हो रहा है. ठीक है, एंड द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन इन रियल साइकिल आर प्रैक्टिकली, वो यहाँ पे शो हो रहा है. तो ये वर्क जो है ना इससे कम है. ठीक है, सो डिनोमिनेटर अगेन इज मोर देन न्यूमरेटर. यू कैन जस्ट सी दैट कि आपके पास कोई 90%, 0.9, 0.8, 0.95 इस तरह की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी. ठीक है, so this is actually about the isentropic efficiency of the compressor and the turbine. Let me ask, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, and then if you have no question then we can just look at this example जो कि इस सारे प्रोसेस को elaborate करता है. Any question? हाँ सर. समझ आ रही है आपको? Okay, so let us look at this example. ठीक है, example में क्या है? You see here, we can just use the same formulas just to elaborate, just to talk about the same ideal and practical, gas turbine cycle. This is actually an example over the formulas that we developed earlier. ठीक है, you see here a gas turbine unit has a pressure ratio of 10/1. pressure ratio क्या मतलब है? ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमारे पास थी ना, तो ये प्रेशर रेशियो है P2 by P1. ठीक है, एंड दैट इज 10/1. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन. एंड अ मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सी, केल्विन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर इस हवाले से हमारे पास क्या है? T3 है. राइट, इस जरूरी नहीं है कि हर जगह T3 होगा, अच्छा, लेकिन सिंगल कंप्रेसर एंड सिंगल टरबाइन के लिए ये. Okay, the isentropic efficiencies of the compressor and turbine अभी जो हमने डिस्कस किया, they are 82% and 85%. ठीक है, तो isentropic efficiency of the compressor is 82% and these 18% are the losses, and isentropic efficiency of the turbine is 85%. सर ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर T3 है या T2 है? अच्छा, ये good question. To solve the problem, okay, of gas turbine cycles, first you need to write down what are given, what are the requirements. Then the next step is to draw the TS diagram. ठीक है, तो सबसे पहले आप TS डायग्राम ड्रा करेंगे. ये तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ ना. तो सबसे पहले आप TS डायग्राम ड्रा करेंगे, वहां से फिर आपको पता चलेगा कि ये T3 है, T4 है, T5 है, क्या है. बात समझ आ गई? यस सर. ओके. आइए नोटेशन आपको वहां से, लेकिन मैंने तो इसको देखा है तो इसलिए हम डायरेक्टली करेंगे. कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. ठीक है, पावर आपने जो है ना वो फाइंड आउट करना है आप इलेक्ट्रिक जनरेटर का, दैट इज गियर्ड टू द टरबाइन. ठीक है, जिस तरह भी हमने देखा स्टेशनरी पावर प्लांट में. विद द एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 15 डिग्री सी. ये एयर एंटर्स टू द कंप्रेसर, तो वो क्या है? T1 ही होगा ना, T1. ठीक है, तो T1 15 डिग्री सी, ये आप जो है ना 273 इसके साथ ऐड कर लें तो जो भी आता है 298 इनका केल्विन आपके पास T1 आ जाएगा. एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकंड, ये मास फ्लो रेट है.
15 kg per second. दिस इज मास फ्लो रेट. फिर ये कहता है कि टेक CP, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एयर. एयर के लिए जो है ना, किधर है, यहाँ पे शायद लिखा होगा. एयर के लिए जो है आप यहाँ पे इसमें कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए, ठीक है. तो फॉर कंप्रेशन प्रोसेस आर फॉर एयर CP is 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin, and gamma, you know, gamma is basically the ratio of specific heat at constant pressure divided by specific heat at constant volume, ठीक है. तो gamma for air is 1.4, ये आपको पता होगा. And gamma for CP for gas is this one in the expansion process, and CP, this gamma for the expansion process is this one. अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि there is a difference between gammas, and the reason is very obvious, because after compression we have air, but after turbine and after expansion we have what? We have gases, मिक्सचर. ठीक है. तो Yes, sir. हाँ, मिक्सचर है, इसलिए जो है ये चेंज हो गया. एंड सेम इज द केस विद CP आल्सो. तो चेंज बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम है, बट स्टिल इट इज देयर. एनीवे, तो यहाँ से जो है ना, द रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड टू फाइंड आउट पावर, ठीक है. तो पावर को फाइंड आउट करने से पहले जो है ना, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द नेटवर्क आउटपुट, ठीक है. एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट नेटवर्क आउटपुट विद द मास फ्लो रेट, तो यहाँ से जो है ना आपको पावर आउटपुट की मास फ्लो रेट आपको गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना है. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस वन, तो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको बताया कि यू नीड टू नो अबाउट T1, T2, T3 एंड T4. ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है. एंड सिमिलरली एफिशिएंसी वगैरह आपको गिवन है. तो यूजिंग दिस यू नो रिलेशनशिप्स, यू कैन सी, ये मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है ना, ये डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है. तो दिस वन इज योर T1, ये आपको गिवन है. T3 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. अगर इस कंप्रेसर को मैं स्प्लिट करूं लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में, तो फिर ये T3 नहीं आएगा, कोई और चीज आ जाएगी, राइट. एनीवे, ये जनरेटर है. नाउ ऑन द TS डायग्राम, दिस इज योर T1, ठीक है. वही TS डायग्राम आप ड्रा करेंगे, राइट, जिस तरह पहले हमने ड्रा किया था. दिस इज 973, दिस इज योर T3. तो यहाँ से अगर आप देखें, हम लेकिन इसको अगर आप देख लें, अच्छा, इसमें यहाँ से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू रिफ्रेश योर नॉलेज, कि ये मैं आपको बता रहा था कि फ्रॉम इक्वेशन 3.21, अब ये 3.21 किधर है, ये इसी बुक में है, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इफ यू वांट टू रिलेट द टेम्परेचर रेशियोज टू प्रेशर रेशियोज, तो इसके लिए ये रिलेशनशिप है, ठीक है. इफ यू वांट टू रिलेट द टेम्परेचर रेशियोज टू प्रेशर रेशियोज फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो फॉर दिस प्रोसेस द टेम्परेचर रेशियोज आर रिलेटेड टू प्रेशर रेशियोज यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है. तो ये बहरहाल कहां से आया है, आपको वहां पे उसको देख सकते हैं. T2S by T1 is equal to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma, ठीक है. You know about P2 by P1, you know about gamma, and you know about T1. The only unknown is T2S. You can readily find out the value of T2S in Kelvin, that is 556 Kelvin. ये find out हो गया. Then after that, then using equation 9.1. Equation 9.1 क्या है? That is the isentropic efficiency of the compressor, ठीक है. So ये हमने पढ़ा था, T2S minus T1 by T2 minus T1, except T2, all the things are known. ये भी known है, ये भी known है, ये भी known है, ये भी known है. You can find out T2 in Kelvin. ये आपके पास ये चीज आ जाएगी. तो T2 is now known to you. इसका मतलब ये कि T2 ऑलरेडी हमें known है, और T3 is also known. Now T2 भी known हो गया. Now you need to talk about T4, ठीक है. This is your T3, ठीक है. और यहाँ से जो है ना, फिर हम सिमिलरली फॉर ये डेटम से है. अच्छा, रिमेंबर दिस इज एक्चुअली T2 फ्रॉम T1 से है, रेशो है ना, ठीक है. ये जो आपको यहाँ से T2 आया, तो एक्चुअली दिस इज यू आर टेकिंग दिस इज योर डेटम आर रेफरेंस, ठीक है. तो अगर आपने टोटल T2 फाइंड आउट करना है, तो यू नीड टू 8288 टू दिस वन, ठीक है. यहाँ से अगर आपने इसकी वैल्यू लेनी है ना, टोटल वैल्यू, तो यहाँ से आप करेंगे, रिलेटिव वैल्यू नहीं बल्कि टोटल वैल्यू, इसलिए जो है ना इसने 288 इसके साथ ऐड किया है. एनीवे, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T4, ठीक है, तो इन द सेम वे
The temperature ratios are, related to pressure ratios, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये प्रेशर रेशियो तो सेम है, अच्छा, चाहे आपके पास T2S, ठीक है, अगर आपके पास ये हो या ये हो, द प्रेशर इज द सेम, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, एंड सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो, ठीक है। तो P2 बाय P1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन सी दैट T3 बाय T4S प्रेशर रेशियो टू प्रेशर रेशियो, तो ये सारी चीजें आपको नोन है। यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T4S and using the formula of the isentropic efficiency of the turbine, ठीक है, that is TD, so the work produced by the turbine in practical cycle divided by isentropic। तो ये जो है ना प्रैक्टिकली आपके पास ये सारे आप कर लेंगे इसको, ओनली T4 इज अननोन, ये T4 जो है ना आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि T4 की क्या वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। Now T1, T2, T3 and T4, जिस तरह मैंने आपको बताया था, all the temperature and different status, they are actually known to you, and you can use this formula that we developed earlier। तो कंप्रेसर वर्क इनपुट क्या है, Cp T2 माइनस T1 के बराबर है, पुट करेंगे आपके पास जो है ना ये आ जाएगा, एंड टर्बाइन वर्क आउटपुट इज, ये आपके पास आ जाएगा, एंड द नेट वर्क आउटपुट इज वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टर्बाइन माइनस वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेसर। तो ये जो है ना आपके पास ये चीज आ जाएगी। एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस वर्क विद द मास फ्लो रेट, जिस तरह मैंने आपको बताया था, so 1098 kilowatt is the power produced if you use these conditions and this, cycle। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? वेरी सिंपल, यस सर, ठीक आ है। गई। ओके, अब ये एग्जांपल 9.2 आप खुद से सॉल्व करें, इसकी एक्सटेंशन में ये है, उसमें जस्ट आपके पास ये है कि उसी को यूज करते हैं उसको एग्जांपल, लेकिन साइकिल निकाला एंड अभी ये जो पास है, तो इफ यू 4% अराउंड यू हैव द साइकिल एफिशिएंसी ऑफ द विच इज वेरी लो, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये आपके पास इफ यू आर यूजिंग द बेसिक साइकिल, so the efficiency of the gas turbine unit is very low, ठीक है। how to increase this we will discuss this in later slides, ठीक है। there is another term involved here that is known as work ratio। अच्छा, यहाँ पे बल्कि मैं आपको अभी से बता दूं, there are some terminologies and some parameters that are important as far as the gas turbine power plants are concerned। one of them is obviously cycle efficiency। you want to improve the cycle efficiency। ये नेक्स्ट लेक्चर के साथ रिलेटेड है, मैं यहाँ पे आपको ग्राउंड बनाता हूँ। तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, वन टू इंक्रीज टू मैक्सिमाइज द साइकिल एफिशिएंसी, जिसको थर्मल एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, वन, एंड अदर थिंग दैट वी वांट टू इंक्रीज इज द वर्क रेशियो, ठीक है। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज दीज टू थिंग्स, थर्मल एफिशिएंसी, साइक्लिक एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो। साइक्लिक एफिशिएंसी की समझ तो आपको आ गई कि नेटवर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, या तो आप इसको कम करें तो ये ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप इसको ज्यादा करें तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी। तो किस तरह हम कम करते हैं, किस तरह ज्यादा करते हैं, वी विल सी, बट देयर इज अनदर थिंग, ओके, दैट इज द वर्क रेशियो। व्हाट इज दैट? नेटवर्क आउटपुट, ठीक है, डिवाइड बाय ग्रास वर्क आउटपुट, ठीक है। अब नेटवर्क आउटपुट क्या है? लेट मी एक्सप्लोर दिस, वर्क ऑफ द टर्बाइन माइनस वर्क ऑफ द कंप्रेसर, इसको हम कहते हैं नेटवर्क आउटपुट। ग्रास वर्क आउटपुट क्या है? वर्क ऑफ द टर्बाइन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्क रेशियो। अब इसको फॉर कांस्टेंट वर्क ऑफ द टर्बाइन कैसे जो है ना हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑफ द टर्बाइन को अगर हम कांस्टेंट रखें तो हाउ यू कैन इंक्रीज द वर्क रेशियो? यहाँ पे एक बात आती है कि इफ यू डिक्रीज the work consumed by the compressor somehow, ठीक है, somehow क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। so somehow if you can decrease the work consumed by the compressor you can increase the work ratio, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो वर्क रेशियो जो भी आपके पास है, ये वर्क रेशियो बहुत कम आया है, we can increase this using some ideas and some concepts, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ तक आपको आगे चलें।
सर ब्रेक ना लेने 5 मिनट से? ब्रेक ले लें, चले सर आप सिर्फ ब्रेक 5 मिनट। ले लें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, इंशाल्लाह फिर जो है ना वापस आते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके जी, सो let us finish up with this lecture. तो चले हम दोबारा जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. So you can see here over here at this slide, we have actually this use of the power turbine. So let us first look at this. Why we want this? Why we want to split this turbine into two? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि previously we have a T S diagram where we have a single compressor and a single turbine. Now here the turbine is split into two. So what is the need of this? So जिस तरह आप कहते हैं कि use of a power turbine, ठीक है, तो इसकी reason क्या है? The reason is very obvious, and that is, if you look at the basic gas turbine unit and its T diagram, so you can see यहाँ पे आप देख लें तो uh, the shaft from which is actually the generator is coupled with the shaft, and the same shaft is used here for the compressor and the turbine. Okay, so compressor, turbine and generator, they are mounted on the same shaft, or they are using the same shaft. Okay, now why we need that extra power turbine? Okay, so you need to justify, because that is actually the turbine is expensive. Okay, so you need to justify क्यों आप इसको जो है ना split कर रहे हैं और दूसरा turbine लगा रहे हैं. The reason is कि look, this the work produced by the turbine here, okay, that is partly used by the compressor
and the remaining is used for some useful work. Let's say for generator and electricity generation and other things. Now look, what if, for example, if the requirement is increased, okay, you need more, let's say electricity, okay, or more power, net power output. अगर इसकी requirement जो है ना बढ़ती है, for example, ठीक है, so if the requirement from this generator is increased, useful power output is increased, but uh, compressor is using the same power, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी को उल्टा ओमेगा हमारे पास है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो the power of this is increased, but the compressor wants to rotate at the same RPM, okay, or it wants the same, it needs the same power, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि undue, and the vice versa is also true. If the power of the compressor increases somehow, but you need lower power from this generator, ठीक है, तो आपके undue जो है ना, you are producing more power, and if you are not storing it, okay, then it is, you are just wasting the power, ठीक है, to make the power unit independent of this, turbine and compressor, we need a power, we need another turbine, ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा टरबाइन जो है ना हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, यू कैन जस्ट लुक एट दिस, वो आपके पास that will be this one. Now you see here the power produced by the high pressure turbine, ठीक है, the power produced by the high pressure turbine, it is completely or totally utilized to run the compressor, that's it, ठीक है, हाँ, जो the power produced by this low pressure turbine, ठीक है, that is actually used for some useful purposes. बात समझ आ गई आपको? And for the same thing, this high pressure turbine is mounted on the shaft on which this compressor is mounted, ठीक है, तो ये एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट, इट्स अ पॉइंट, इसको हम डिस्कस करेंगे, अच्छा, इसको डबल स्पूल कहते हैं, सिंगल स्पूल कहते हैं, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, when we will be splitting this compressor also into low pressure and high pressure compressor, but for the time being you can just say that why we need this power turbine. I told you earlier, ठीक है, कि to make the power independent, the power unit independent of this high pressure this turbine and compressor, ठीक है, to split this shaft. So for that reason, the power produced by high pressure turbine क्या है, then the power produced by high pressure turbine ये है आपके पास, ठीक है ना, this one, that is what this is the work consumed by the compressor, then 2 to 3 is the heat supplied, 3 to 4 is the power produced by high pressure turbine, ठीक है, जो कि ये है, right, and this is the power produced by low pressure turbine, ठीक है, तो ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे लिखा है कि the power produced, that is what, that is CP, ये G है, CP of gas, CP T4 minus T5, CP T4 minus T5, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, this is T4, this is T5, ठीक है, if you multiply CP with this temperature difference, that will be your net power output, ठीक है, या net work output, sorry, so net work output is from here, and the work produced by high pressure turbine is totally utilized by what, by the compressor, ठीक है, तो इसलिए जो है ना, this is actually यहाँ पे आप देख सकते हैं, this should be air, ठीक है, ये air है, ठीक है, और ये आपके पास केस है, so the power produced by high pressure turbine is equal to the power TPA T2 minus T1, this is the power consumed by the compressor, ठीक है, so dedicatedly high pressure turbine is used to run the compressor, that's it, and the other turbine, that is low pressure turbine, it is used to produce the power, produce the work, and that work is utilized for some useful purposes. इसको high pressure, इसको low pressure क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया, you know very well कि आपके पास जो है ना, this P3 is greater than, P4, ठीक है, यहाँ से constant, this is constant pressure line, this is constant pressure line, this is constant pressure line, ठीक है, तो ये low pressure के ऊपर ऑपरेट करता है, ठीक है, low temperature के ऊपर, for that reason this is low pressure turbine and that one is a high pressure turbine. So use of a power turbine की समझ आ गई आपको? Yes, sir.
Okay, then after that there is an example. ये बुक में सॉल्व है. इसको आप खुद से करें. इसमें कोई मुश्किल नहीं है. Just you know it is based on this thing. ठीक है? It is based on this power turbine. The the complexity or addition will be that यहाँ पे T1 we have T2, T3, T4 and T5 etc. ठीक है? And the diagram is also this one. So these are actually the relevant formulas you can use and to solve this question. Very simple है. इसमें कोई इस तरह का issue नहीं है. ठीक है? तो इसको आप खुद से कर लो. You are not you know spending time on this. ठीक है? Solve example है. Then after that, there are some 2-3 slides, so we can finish up with this lecture. Kindly turn off your mic. किसी का mic जो है ना वो on है, शोर आ रही है. Turn off your mic, please. All of you. Turn off your mic, please. सर सबके माइक ऑफ है सर. जो कुछ आवाज आ रही थी तो anyway. Okay, now then after that we have aircraft engines. Okay, we will discuss this topic in chapter 10 also, but let me give you a taste over here. This we have actually three types of aircraft engines. Okay, one is the turbojet engine. Turbojet engine. ठीक है, turbojet engine. अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, this is actually turbojet engine. Okay, where the air comes, it is compressed, it is more compressed, in fuel is added, and in the turbine subsequently it is expanded, and at the end you are having power output. ठीक है, that is basically your turbojet engine. यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक modification है, and that modification is, यहाँ पे अगर आप देख लेना, so we have actually here the compressor and a high pressure turbine and low pressure turbine, and at low pressure turbine where the expansion takes place, the power is produced, the work is taken in. ठीक है, यहाँ पे work output आपके पास आता है. ठीक है, if you use the same concept for the turbojet engine, अच्छा बल्कि turbojet engine थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट बता दूं. Turbojet engines, they are used for high altitude and high speed. ठीक है, हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड के लिए अमूमन मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए यूज होता है. ठीक है, क्यों यूज होता है ये भी हम किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड एंड हाई speed. ठीक है, and then we have another one, that is turboprop engine. turboprop engine. ठीक है, turboprop engine क्या है? तो turboprop engine हम आगे डिस्कस करते हैं, but that is used for low altitude and for low speed. जिस तरह आप लोगों ने देखे होंगे ये ATR वगैरह, ठीक है, जिसके आगे प्रोपेलर लगा होता है, जस्ट लाइक C-130, या आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो जुनेद जमशेद साहब जो है फोटो के थे, दैट इज बेसिकली योर ATR 42. ये जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं 50-60 पैसेंजर के लिए, दोज आर बेसिकली टर्बोप्रॉप. इन फ्रंट ऑफ इंजन यू हैव एक्चुअली अ प्रोपेलर ओवर देयर. ठीक है, उसका भी अपना एक प्रिंसिपल है. तो फॉर लो अल्टीट्यूड एंड फॉर लो स्पीड दे आर यूज्ड. क्यों हम लो अल्टीट्यूड लो स्पीड के लिए यूज करते हैं इस चीज को, देयर इज रीजन बिहाइंड दैट. ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. And between these two, we have actually turbofan engine. Turbofan engine. ठीक है, तो turbofan engine जो है ना हमारे पास क्या है कि this is actually the most efficient engine. ठीक है, this is efficient engine. तो ये क्यों efficient है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, but this is used for medium height and medium speed. तो मोस्टली जितनी भी हमारे पास कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, commercial aircraft they are actually in this regime. ठीक है, turboprop या turbofan जो है ना इसको यूज करते हैं. ठीक है, and they are actually the most recent ones, right? And turbojet, अच्छा, the efficiency of these two are more than the turbojet engine. ठीक है, right. And there is another thing, all of them mostly these two, okay, they are subsonic. Okay, sonic और subsonic होते हैं.
जिसकी जो है ना स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है इसकी स्पीड, राइट। एंड दिस टर्बोजेट्स एंड रॉकेट्स एक्सेट्रा दे आर हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक, ठीक है। एक सुपरसोनिक जो है एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट बना था जिसका नाम था कनकॉर्ड, बट इट वाज एक्चुअली ग्राउंडेड ड्यू टू सम reasons, ठीक है। One of them was the passenger was not using was not basically having comfort over there, ठीक है। तो उसका जो comfort level था इस फ्लाइट की स्पीड के हवाले से वो बहुत कम था, ठीक है। सो दे वर नॉट फीलिंग वेल ओवर देयर, सो फॉर दैट रीजन इट वाज एक्चुअली ग्राउंडेड कनकॉर्ड के नाम से। अभी तक अभी जो है ना तो वो सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मिलिट्री जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक होते हैं। So these three are basically the aircraft engines. Now, look at this. The air enters here. It's the same diagram, okay? And it exits from the compressor and it is given to the combustion chamber, okay? Where the fuel is spread and you have high temperature, high pressure gases, and they are, this is expand in the turbine, right? And the work is produced. And the work that is produced by the turbine is totally utilized by the compressor. That's it, okay? The exhaust of this turbine is not thrown directly into the atmosphere, ठीक है, but it is basically passed through a nozzle. ये एक nozzle से pass किया जाता है exhaust को, ठीक है। And you know very well for subsonic flow, this is actually shape of the nozzle. So in the nozzle, the fluid or the gases are accelerated. The velocity of the gas is increased using this nozzle, ठीक है। तो इंक्रीज करने से क्या मतलब है कि द मोर इज द एक्सपेंशन, क्या है एक्सपेंशन इज एक्चुअली यूर प्रेशर ड्रॉप P4 P5, दिस इज यूर प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। इफ दैट एक्सपेंशन इज इन द टर्बाइन इट विल रोटेट शाफ्ट फॉर यू। If this expansion is in the nozzle, it will not rotate shaft for you. It will not be doing any work, but it is accelerating the fluid, ठीक है ना। प्रेशर ड्रॉप होता है तो you know very well, expansion takes place, pressure drops and velocity increases, ठीक है। So the more is the velocity at exit, the more will be the thrust produced, the action and reaction हमारे पास जिस तरह होता है। तो when the high jet, इसलिए जो है ना इसको टर्बोजेट कहते हैं, ठीक है। The high velocity fluid, the high velocity gas, it is exiting are leaving this nozzle, ठीक है। And as a result, a thrust is produced in the forward direction, जिसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट थ्रस्ट। एयरक्राफ्ट विल बी हैविंग द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास क्या है, दिस विल बी द थ्रस्ट that is produced in this fashion, okay, and you are saying that this is your gas turbine engine. This type of gas turbine power plant or gas turbine engine will be your that is used in the aircraft and it is the turbojet engine, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्बोजेट इंजन, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ से शायद कहीं होगा, हमने शायद देखा होगा, if you look at maybe this one, ठीक है। So after this, if you use, let's say this by not you know pushing this exhaust gases directly into the atmosphere, if you use this type of nozzle, ठीक है, इस तरह नोजल अगर आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नोजल अगर आपने काउलिंग देखी हुई ना, अगर ये आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट इंजन को, दैट इज इनकैप्सुलेटेड इन द काउलिंग, ठीक है। उसकी फिर जो आपके पास जो आपको नजर आता है उसकी जो केसिंग है, दैट इज इन द शेप ऑफ नोजल, आप देख लेंगे एयरक्राफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना एग्जॉस्ट इज बेसिकली पास थ्रू दिस नोजल and as a reaction, as action and reaction, the thrust is used in the forward direction, ठीक है। जितना आप जो है ना यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये thrust जो है ना ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जिस टर्बोफेन इंजन, अच्छा ये टर्बोजेट इंजन की एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ टर्बोफेन इंजन, जो चलिए हम यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टर्बोफेन इंजन में क्या होता है कि इन द टर्बोफेन इंजन what happens is that यहाँ पे if you see here, let's say for example you are taking 10 units of air, तो सारा का सारा air जो है ना it takes part in this compression process and then combustion process and then expansion process and then it is leaving this nozzle, ठीक है। So for that reason this is turbojet engine.
टर्बो फैन इंजन में क्या होता है कि यू सी हियर, बल्कि यहाँ पे चलिए हम इसको देख लेते हैं। इफ यू सी हियर लाइक दिस, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल द सेम 10 यूनिट्स 10 केजी पर सेकंड या 100 जितना भी है, एयर इज टेकन इन, राइट? तो maybe it depends. Okay, we have actually high bypass ratio engines and low bypass ratio engines, but let's say for example 40% of the air, okay, 40% of the air it comes to the compressor, and then the combustion chamber, and then the expansion takes place, and at the end you are having output on the shaft, ठीक है? Remaining 60% it is bypass, ठीक है? रिमेनिंग 60 जो है ना, ये क्या है? ये बाईपास है यहाँ से, इट इज बाईपास ओवर हियर, ठीक है? एंड इट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द कंबशन प्रोसेस, इट इज जस्ट बाईपास। ओके, तो बाईपास से क्या मतलब है कि यू आर नॉट यूजिंग एनी फ्यूल ओवर हियर, तो यहाँ से जो है ना इसकी इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज करती है। एंड मेरे पास यहाँ पे बैटरी भी लो हो गई है, so I will try to quit, but let me finish up with this one जितना भी हमसे हो सका। So this is actually one of the aircraft engine turbojet, और यहाँ पे टी डायग्राम से आप शो कर देख सकते हैं। 1 to 2 is compression process, 2 to 3 is heat addition, 3 to 4 is the expansion process that is producing work for you in the turbine, 4 to 5 is also the expansion process but it is not producing any work for you, that is actually expansion in the nozzle। आपको पता है ना वर्क की डिफिनीशन, थर्मोडायनामिक डिफिनीशन ऑफ वर्क, कि वो जो है ना किसी चीज को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, सर कहाँ गए? सर चले गए मेरे ख्याल में, बैटरी छुट्टी डेड कर हो गए? गई मेरे ख्याल में। फयाज सर आएंगे या नहीं? 3 घंटे नहीं का सर नहीं आ रहे। लास्ट 3 घंटे की क्यों नहीं आ रहे? बैटरी खत्म हो गई सर सर ने की। वैसे भी कहा था कि ये लास्ट राइड है। चलो सारे सर लीव को करो कहो ना। कि अल्लाह ऑफिस तो बोल के जाए ना। लीव कर, रिकॉर्डिंग फिर बंद होगी। नहीं, सर को बोलो कि अल्लाह हाफिज तो बोल के जाए ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं सर को।